ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಭಿಸಿತು. ಅಂತಹ 80 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿದಂತಹ ಖುಷಿ ಸಂಭ್ರಮ ರಾಜ್ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮರ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ. ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ. ಬಾಪೂಜಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನಮನ. As Prime Minister walks around Bapu's Samadhi, it is more than a gesture of remembrance. The Prime Minister, on behalf of the entire nation, took a pledge to walk the path Bapu showed us, to uphold the truth Bapu lived by, to carry forward the peace Bapu believed in, and to build the India he dreamed of. For the journey may be long, the road may be challenging, and the world may test our resolve. But Mahatma Gandhi's message continues to guide us. Walk with truth, walk with courage. शांति के मसीहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से पुष्पांजलि दी और श्रद्धा सुमन अर्पित किए. ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने नेशनल फ्लैग गार्ड के जवान अपनी जगह पर मौजूद हैं. नेशनल फ्लैग गार्ड की संयुक्त टुकड़ी है जिसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी और 32 अन्य रैंक के कर्मी शामिल हैं. प्रधानमंत्री महोदय के राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद नेशनल फ्लैग गार्ड की संयुक्त टुकड़ी द्वारा तिरंगे को राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी. मेजर लोकेंद्र सिंह शेखावत इस अंतर सेवा रक्षक और पुलिस रक्षक दल की कमान संभाल रहे हैं. हमारे स्पेशली माउंटेड कैमरा से ये विहंगम दृश्य लाल किला परिसर का आप तक पहुंच रहा है. ठीक सामने वंदे मातरम की प्रतिमूर्ति बनाते हुए भारत की युवा शक्ति, बाईं ओर के एनक्लोजर्स में स्पेशली इनवाइटेड गेस्ट जिन्होंने भारत सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ लिया है. And the Indian Air Force there preparing for a stupendous flypast with Mi-17 helicopters commemorating the historic Independence Day and the 150 years of the national song Vande Mataram. Preparations all done, contingents ready of the Guard of Honor as well as the National Flag Guard. And here at the Red Fort, you can really feel the excitement building. The venue is filling up, and what a wonderful sight it is to see people from so many different parts of the country coming together for this special morning. We can see the colors of India all around us. Bright uniforms, colorful turbans, traditional attire, uniforms, and of course, the tricolour waving proudly among the crowd. There are people who have travelled from different states, from cities and villages, from different professions and different walks of life. ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಕೆಂಪುಕೋಟೆ. ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯತ್ತ ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ. ಅವರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಾಗಿದೆ. 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಕ್ಷಣ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಾಧಕರು, ಸಂಸದರು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ತ್ರಿವರ್ಣ.
The feeling of being 27,000 ಮಂದಿ Indian, ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತಹ and perhaps that is what makes 80ನೇ Independence ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ Day so ಸಂಭ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ special. ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ The National Guard of Honor and ವಂದೇ the Guard ಮಾತರಂ of Honor ready ಮೊಳಗುತ್ತಾ ಇದೆ. at their feet, ಜನ smart and ಮನದಲ್ಲೂ stoic ಕೂಡ upon his arrival at the Red Fort. ಮೂರು The Prime ಸೇನೆ Minister will be received by ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, ಸೇನಾ Raksha ಪಡೆಗಳು Rajya Mantri Shri Sanjay ಗೌರವ Singh and Defense ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ Secretary Shri ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು Rajesh Kumar Singh. ಭಾರತಾಂಬೆಯ The Defense ಜನ್ಮದಿನದ ಈ Secretary will ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ introduce the General ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತಹ Officer Commanding GOC Delhi Area, Lieutenant General Rajesh ನವದೆಹಲಿಯ Singh ಕೆಂಪು to the ಕೋಟೆಯ Honorable ಈ Prime ದೃಶ್ಯ Minister. The ನೋಡೋದಕ್ಕೆ GOC ಅದ್ಭುತ. Delhi area will then conduct the Prime Minister to the saluting base, where a combined inter-services and Delhi Police Guard will present general salute to Shri Narendra Modi. Thereafter, the Prime Minister will inspect the Guard of Honor. The humidity hasn't dampened the high hopes and the happiness of the event. Everyone in their seats awaiting the arrival of the Honorable Prime Minister, especially the youth power, the best in our country, who will take the torch forward, the NCC cadets, and every audience member in this vast ocean. A whole view of the arena coming to you from a specially mounted Doordarshan camera. Everyone awaiting, everyone excited, looking around as to when the Prime Minister shall arrive. The Raksha Mantri and the Raksha Rajya Mantri happily awaiting the arrival of the Prime Minister at the ramparts. लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने ज्ञान पथ पर जो एनसीसी कैडेट्स मौजूद हैं, जो युवा शक्ति मौजूद है, उनमें ख़ास उत्कंठा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब प्रधानमंत्री महोदय देश को संबोधित करेंगे और उसके बाद जब उनकी वापसी हो रही होगी तब वे उनके पास आएंगे। लेकिन यहाँ वायुसेना के जांबाज मी-17 हेलीकॉप्टर्स में वायु विचरण के लिए पूरी तरीके से तैनात हैं, और ये वो मी-17 हेलीकॉप्टर्स हैं जो जब प्रधानमंत्री महोदय ध्वजारोहण करेंगे उसके ठीक बाद लाल किले की प्राचीर के सामने लाल किला परिसर को पुष्प वर्षा से आच्छादित करते हुए नजर आएंगे। मौसम चाहे कैसा भी हो, परिस्थितियां अनुकूल हों या प्रतिकूल हों, लेकिन देश के स्वाधीनता दिवस समारोह में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का उत्साह, उनका जज्बा देखते ही बनता है। हर आम और खास व्यक्ति आज के इस राष्ट्रीय उत्सव के समारोह में जुड़कर खुद को बेहद खुश, प्रसन्न और भाग्यशाली महसूस करता हुआ नजर आता है। And this is truly a moment for these children, these cadets who are here at the Independence Day celebrations. Imagine being from varied parts of the country and then coming together in unison, getting prepared, getting ready, reaching here early in the morning and then excitedly waiting for the Honorable Prime Minister and his inspiring words. And there's the cavalcade of the Honorable Prime Minister now swiftly moving towards the ramparts of the Red Fort.